A mega exclusive from Canada. Well, this is with regards to Khalistani goons who have protested outside Kalibari Temple in Mississauga, Canada. Now, they were holding Khalistani flags and raising slogans against the Indian government. And the K-Sympathisers, the Khalistani sympathizers, also wanted justice for Hardeep Singh Nijjar. Now, top intelligence sources have informed CNN News 18 that these goons are now frequent visitors to Hindu temples and they intimidate Hindus and stay there for quite a long time. This is the particular information that we are receiving with regards to Khalistani goons who have protested outside the Kalibari Temple in Canada, in Mississauga. And right now we have Abhishek Jha joining us on this broadcast to bring us more details with regards to this story. Abhishek, what we are seeing at this point is that these Khalistani sympathizers have consistently been threatening Hindus. Earlier they were doing in Surrey, as brought to the notice to our audience by a Canadian MP himself. And yet, after all these threats and all of this taking place in the broad daylight, the Canadian authorities are not taking any actions. That's a bit of disappointment, Shriya, from the Canadian side, because we have seen multiple times in the past India has raised the issue with the Canadian side on the threat and intimidation coming from Khalistani groups. These violent elements have been harassing Indian community members. They have been issuing threat and intimidation against Indian diplomats. A full-fledged social media campaign against Indian diplomats has been going on in this part of the world. But despite Indian government raising the issue time and again, there has been some sort of apathy from the Canadian side, and that has not worked as per the Indian demand and the national interest, national security that India has raised on the Canadian side. Abhishek, I'm very sorry, I'll have to interrupt you there, because right now we also have BJP's Manjinder Singh Sirsa joining us on this broadcast to give us his reaction on what has happened in Mississauga in Canada. Mr. Sirsa, a very good afternoon to you. Well, to begin with, firstly, your reaction to this and also the Indian government's reaction to the fact that the Canadian authorities have not been taking any action despite now these becoming not just protests but also open threats that are being given to Hindus in the broad daylight there. देखिए, ये एक बहुत ही साजिश के तहत किया जा रहा है. It is a very deliberate attempt by those people who are funded by ISI to spread a hate against Sikhs, to divide between Sikhs and Hindus. It is not the first time this has happened. Time and again, Gurpatwant Singh Pannu has been issuing a statement saying कि कनाडा में से हिंदू कनाडा छोड़कर भाग जाएं, नहीं तो मैं ये करूंगा वो करूंगा. सोल पर्पस से कि किसी तरीके इतनी नफरत फैलाई जाए कि उस नफरत के चलते भारत में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बने जिसमें हिंदू और सिखों के बीच में एक खाई बढ़े और उसका कोई नुकसान हो और फिर वो विदेशों में ब्लेम कर सके कि देखिए जी ये हो रहा है, ये हो रहा है. मुझे बहुत दुख और खेद है कि जो सिख परंपराएं हैं, जो सिख इतिहास है हमारा, जो सिखों की इतनी बड़ी कुर्बानियां हैं, उन सबको दरकिनार करके कुछ लोग शरारत मंच से जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि ये बात आगे बढ़ाई जाए, इसका नुकसान कम्युनिटी को हो और कम्युनिटी के लॉस को वो फिर एक राजनीतिक तौर पर इसको बुना सकें और इसके एवज में लोगों से पैसा इकट्ठा करके उनको इंसाफ दिलाने की बात कर सकें. तो मुझे बहुत खेद इस बात का भी है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इस चीज का संज्ञान लेने की बजाय वो भारत को ही दोषी ठहराते हैं किसी कैनेडियन के कत्ल को लेकर बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के, ताकि इसमें और तेल डाला जा सके इस जलती आग में. मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, ना भारत में ना विदेश में बैठे सिखों की ऐसी कोई भावना है. ये जो लोग दस्तार में दिखाई दे रहे हैं ये इनके सिख जरूर हैं, लेकिन ये आईएसआई और गुरपतवंत सिंह पन्नू के स्टूच हैं जो उसके कहने पर ये सारा काम कर रहे हैं जिससे हमारे सिखों का बहुत दुनिया भर में नुकसान हो रहा है. मुझे पता है कि वहाँ पे जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी सिरसा जी, वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है जो मेजोरिटी में वहाँ पे भी हमारा साथ देती है. हमारे दुख में सुख में उनका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में यकीन रखते हैं, गुरु नानक देव में यकीन रखते हैं, वो भी जानते हैं, इसीलिए वो संयम रखे हुए हैं. और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ और सभी कनाडा वासियों का, भारत मूल के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़ा संयम बनाया है. इन शरारतियों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आपको जानते हैं कि जानबूझकर कर रहे हैं और ये बढ़ावा लाना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने संयम बरता उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ.
जी बिल्कुल सर जी, हमारे साथ CNN न्यूज़ 18 पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।